Good morning, class 9th. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, from now onwards, we will going to start with the revision of your SST for your upcoming examination, that is your half-yearly examination. Before starting with the revision, I would like you all to know the scheme that will going to be followed in your upcoming half-yearly examination. That is, your question paper will comprise of 80 marks and the 40 marks will be for the MCQ type questions. That is, the 15 marks will be for the true and false, and rest of the 25 marks will be for the pick the correct answers. Then the next 40 marks will be for your brief question answers as well as the long question answers. In the brief ones, you will going to answer the 4 questions of 5 marks each, and in the long question answer you have to answer the 2 questions of 10 marks each. So this is the scheme which is being followed in your half yearly examination, and your PT1 syllabus will not going to be included in your half yearly examination. So it is my humble request from all of you that please do attend this examination, as it will going to increase your possibility of getting into the next standard, that is class 10th, and also this is your preparatory level for your for your class 10th, and if you give this class 9th examination, you will be halfway done with your boards examination of your coming class 10th. So it is a request to all of you that please do attend this examination. It is very important from point of view of your promotions. So let's start with the revision. In this class, we are going to revise the second chapter of your civics, that is constitutional design. As you've already studied that what do we mean by the constitution. Constitution, it is the certain basic rules that the citizen and the government have to follow. हमें सबको पता है कि ये जो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट को और सिटीजन को फॉलो करने होते हैं एंड जो सिटीजन होते हैं उनके लिए कुछ ड्यूटीज़ एंड राइट्स होती हैं. सिमिलरली आपकी गवर्नमेंट के पास भी ड्यूटीज़ एंड राइट्स होती हैं जिसकी सेफ गार्डिंग इज़ बिंग डन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया. In this chapter we had taken up the example of South Africa, in which हमने देखा था कि नेल्सन मंडेला he fought against the apartheid regime, a regime in which the blacks were considered as the you can say degraded class consider किया जाता था, जो majority class था साउथ अफ्रीका का, by the minority white गवर्नमेंट. जो वहाँ के वाइट्स थे उनके वो अपार्थाइड प्रैक्टिस करते थे अगेंस्ट दी ब्लैक्स ऑफ दी साउथ अफ्रीका, जिसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने बहुत बड़ा यू कैन से एक मूवमेंट चलाया. एंड आफ्टर दैट दी साउथ अफ्रीका बिकेम दी you can say the ideal constitution. It made it for itself the ideal constitution and thus making it an ideal democratic country. Then later on we have seen that what do we mean, why do we need constitution, what is the need of the constitution for any country. So to this the answer was that it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे अंदर ट्रस्ट जनरेट करता है, लोगों के अंदर ट्रस्ट जनरेट करता है. किस बात का ट्रस्ट? कि हर कोई इंसान अलग अलग होने के बावजूद भी he or she can reside together with the other people also. The next is it specifies how the government will be constructed, who will have the power to take which decision. इसमें आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आपको एक वेल डिफाइंड आपको एक ओवरव्यू देता है कि किसके पास क्या क्या राइट्स होंगे, किसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी और कौन कौन से डिसीजंस किसके किसके हैंड में होगा. The next one is the third point was that it lays down limits on power of the government and tells us what the rights of the citizens are.
मतलब गवर्नमेंट को डिक्टोरियल गवर्नमेंट बनने से रोकता है, डिक्टेटरशिप के फॉर्म में बनने से रोकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एज वेल. देन द फोर्थ वन इज दैट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एज अ सिटीज़न अस्पायर करता है, हमें इंस्पायर करता है कि हम अपना जो हमारी जो कंट्री है, वी शुड मेक अ बेटर कंट्री विद द एवरी पासिंग डे. देन उसके बाद आता है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, to which we have seen that the process started during the national struggle for freedom itself. जब हमारे यहाँ फ्रीडम का स्ट्रगल हो रहा था तभी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आप इंडिया से बाहर गए थे पढ़ने के लिए, और उन्होंने वहाँ पर, जिसमें बी आर अम्बेडकर इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम विच इज़ बीइंग टेकन while we talk about the framing of the constitution. Why? Because he was the president of the constitutional committee. सो यहाँ पर आपका प्रोसेस हमारे फ्रीडम ऑफ जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम था, वी हैव स्टार्टेड दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टाइम ओनली. देन उसके बाद आपकी 1921 में ड्राफ्ट तैयार किया गया, एंड 1931 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर लीडर्स दे डिमांडेड इन द ड्राफ्ट. उन्होंने ड्राफ्ट में कुछ सर्टेन राइट्स को डिमांड किया, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सोशल जस्टिस, राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी. यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने बहुत यूनिक फीचर था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का. देखो, हमने इवन दो वी आर बीइंग इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बट in British constitution also the right to give to citizen, they had not given all the citizens the right to vote. But हमारे यहाँ what we decided that we're going to adopt the adult franchisee system, through which each and every person of the country will going to have the power to vote, and thus his vote will going to be counted in making up the government. So this is how our constitution, the certain demands in the constitution was laid down by Motilal Nehru and 8 other leaders. After that, the government, the people, they have already taken up the provincial legislature, the elections of the provincial legislature, which was being conducted by the Britishers itself. और जिससे हमको आइडिया हो गया था कि हमारे यहाँ किस तरह के इलेक्शंस होने चाहिए, किस तरह का हमको इलेक्शन में यू कैन से क्या हमको प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलेंगे. देन आफ्टर दैट, लीडर्स इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब उसको फ्रेम किया जा रहा था, जब उसकी मेकिंग हो रही थी, तो जो लीडर्स थे, द लीडर्स हु वर इन्वॉल्व इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड थे. क्यों? जैसे कि आपके फ्रेंच रिवोल्यूशन, आपका ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उससे इंस्पायर्ड थे, और यूएस की बिल ऑफ राइट्स से. देन उसके बाद दे ऑल्सो लर्न व्हाट द ब्रिटिशर्स वर डिनाइंग इंडियन सिटीजन. जब हमारे यहाँ के लोगों को बाहर के जो आइडियाज़ थे, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ थे, व्हेन द लीडर्स ऑफ इंडिया दे केम इनटू टच ऑफ दीज आइडियाज़, देन दे गॉट टू रियलाइज़ कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमको किस चीज़ से डिनाई कर रहे हैं, एंड व्हाट आर दे नॉट प्रोवाइडिंग अस, एंड they are, but still they are considering themselves to be the best of the rulers. Then after that, in this chapter we have studied about the constitutional assembly elections, to which we have seen that the elections for the constitution assembly was held in 1946, to which B.R. Ambedkar was appointed as the chairman of the drafting committee. Drafting committee आपकी वो थी जो आपके constitution को ड्राफ्ट जो होता है, बेसिकली इट इज़ दी यू कैन से द रफ आइडिया ऑफ और द रफ स्केच ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट. तो हमारा जो लीगल डॉक्यूमेंट था, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एक यू कैन से रफली क्रिएट करने के लिए, या रफली कह सकते हो, और यू कैन से कि उसमें हर एक पॉइंट को
इंक्लूड करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप हुआ था, टू विच बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन. देन constitution, it was adopted on 26 November 1949 and it was enacted on 26 January 1950, to which we celebrate as the Republic Day. Then after that, the constitution of our India, what does it shows? It shows the you can say the minds of our country, and also it shows the unity in the diversity of our country. देयर आर सर्टेन क्वालिटीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एडेड है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंटायर वर्ल्ड. To this, we come to an end of the revision of this chapter. I hope and wish that you all prepare well for your examination and do give this examination. Thank you so much. Have a great day ahead.